Hello friends, how are you? I'm Kuldeep Bhautik. Once again, hearty welcome this socially social channel. And today I am here with one of the ornament of language which is very essential that we call as figure of speech. It is a very essential part of language English, Hindi, Marathi or any other languages of the world. Figure of speech. That is what we call as ornament of language. Why it is necessary? ये जरूरी क्यों है? Just because to beautify the language, it is essential to use some ornaments, and that ornaments are being called as figure of speech. There are lots of figure of speech. कई सारे figure of speech है जिनमें से कुछ इंग्लिश की figure of speech जो हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, फॉलो करते हैं. पोएम्स में खासकर ये फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने मिलेंगे जिनकी जानकारी होना एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है. ओके, सो वी आर हियर विद सम कपल ऑफ figure of speeches which are really very essential to know, easy to understand, and at the same time essential. Okay, let's go from easy to hard. The very first, as you may able to see the board, what I have written earlier, the first one that is called as alliteration. Alliteration with spelling, which is very essential. Some people are called as alliteration, some are called as alliteration, and the pronunciation may be different, but the sense that a letter or a sound expresses in a repeated form in a single line. एक ही लाइन में एक लेटर या सेम साउंड लेटर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. एक से ज्यादा टाइम अगर एक ही सेंटेंस एक ही लाइन में वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? alliteration. Alliteration. I hope you understood. What is alliteration? That a letter or a same sound letter is being repeated more than once in a line or sentence. For example, she was shivering with shock. आप यहाँ देख सकते हैं. In this sentence, I repeat, she was shivering with shock. Here, she, sh, shivering, sh, and shock, sh. These alphabets or this sound, sh, is being repeated continuously in the same line. And thus, the figure of speech is occurred here as alliteration. I hope you understood. It is very easy to understand. और हैरत की बात तो ये है कि हर पोएम में हर एक दो लाइन के बाद आपको ये alliteration मिलेगा ही मिलेगा, because same sound are being used in the poem specially in order to make the balance of rhyming scheme or rhythm. Okay. With that, there is another figure of speech named as repetition. Like alliteration, repetition is also, as the name suggests, repeated something. कुछ repeat कर रहा है. Then that is nothing but either a word or the group of word which is called as phrase. Okay? या तो एक शब्द या शब्दों का समूह एक साथ रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में. So वो जो figure of speech होगा वो होगा repetition. I repeat, a word or a group of word, what is called as phrase, is being repeated in a line, that is called as repetition. The figure of speech is repetition. Difference between alliteration and repetition, that alliteration repeats only a letter or a sound, whereas the repetition is being repeated by the word or the group of word. Example of repetition is, I have written here, you may get up, up, up. The life climbs up. After reading this line, ये line पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे, it might be either dialogue or a line of a poem. So here, आप देख सकते हैं, word up, up, up. The life climbs up. The word up is repeated 4 times in this line. So, a word or the group of words. Here word is being repeated more than one, and thus here the figure of speech is repetition.
Are you all getting the point? If not, you may repeat the channel, you may repeat this video to see, to view, to understand, to grasp. And after getting it, please write your comment on that so that I can improve, I can provide you more knowledgeable things which may be easy to understand from my level, from personal level as a student, as a person. Okay, the very next, that is simile, which is another very simple and sweet figure of speech. Simile, S-I-M-I-L-E. It is just like pronounced as a seems like simile, but it is being pronounced as simile. Okay, simile. Simile is nothing, but it is placed a direct comparison. Okay, it is placed a direct comparison. In a line, something is being compared with some other thing directly, not indirectly. कई बार हम इन जनरल है ना देखकर बोलते अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी सिस्टर सरी की दिखती है. व्हाट डज इट मीन सिस्टर सरी की? इट इज नथिंग बट सिमिलर. Okay, in a line, how can we identify simile? It is being written, it is being compared with as or like. Okay, for example, or the examples of positive degree. No other thing is as good as that, as that comes, that all are the examples of simile. I hope you understand. It is being compared with the word like as well. As की जगह पे अगर आप like भी use करें तो भी वो simile ही कहलाएगा because it's a direct comparison. I have written one example here that he is as brave as lion. वो कैसा कितना brave है? बिल्कुल lion की तरह brave है. Okay, so as is being compared. Who is compared with whom? That he is compared with a lion. Okay, it is a direct comparison and it is simile. There is one another comparison as well in the same figure of speech which is called as metaphor. M-E-T-A-P-H-O-R. Metaphor. What is metaphor? It is also comparison, but it is called as indirect comparison और implied simile. जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि वो कंपैरिजन हो रहा है बट इन रियल कंपैरिजन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट की दुनिया में अगर बात करें, गली नुक्कड़ कॉर्नर में भी क्रिकेट खेले जाते हैं और नाम 2020 एंड व्हाटएवर दिए जाते हैं. सो हम बोलते हैं हमारे गोंदिया का, हमारे एरिया का, हमारे गांव का, हमारे गली का, हमारे टीम का. इट माइट बी सचिन तेंदुलकर, it might be Sehwag, it might be someone else. So what does it mean? The person is really the Sachin? He's really the Sachin or Sehwag? No, not at all. We are comparing the person, but here that two different things are not different, but they all are alike, same, एक ही है. ऐसा जब comparison किया जाता है, that is called as repetition. जैसे यहाँ पर हमने example लिखा है, he is a lion. वो क्या है? वो क्या है? शेर है. So यहाँ पर शेर और वो, he and lion, they are not two different object or things, but they are same, alike. That is called as metaphor. Simile, that is direct comparison, जो as या like के जरिए show किया जाता है in a line. और metaphor क्या है? Implied simile है. दो चीजें, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग न होकर वो क्या है? एक ही है, ऐसे दिखाया जाता है. उम्मीद करते हैं कि जो समझा रहे हैं आपको आसान भाषा लग रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा. अगर आप नहीं समझ पाए, एक बार फिर दोहरा रहे, अगर आप नहीं समझ पाए इस वीडियो को आप बार बार देखिए, यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. और अगर लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी आपको लगती है, देन प्लीज शेयर योर कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स. द नेक्स्ट वन is personification. That is one of the beautiful figure of speech which is called as personification. What is personification? अगर हम इसको bifurcate करें, divide करें, तो यहाँ पर निकल रहा है person and fication. Okay, person, human,
Okay, so what is here? The action of human being is being shifted to the non-human or non-living things. Okay, actions जो है, जो deeds है, वो human से non-living या living से non-living में shift होते जाती है. अगर इस तरह का सेटअप, इस तरह का राइटअप आपके सेंटेंस आपके लाइन में आ रहा है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, द रोज इज स्माइलिंग. द रोज इज स्माइलिंग. द रोज इज अ फ्लावर. हैव यू एवर सीन रोज स्माइलिंग विद समवन और समबडी? टू अस नॉट एट ऑल, कभी नहीं. लेकिन रोज हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. स्माइल करने की जो एक्चुअल एक्शन है वो लिविंग थिंग ह्यूमंस की है, जो शिफ्ट हुई है नॉन ह्यूमन, इट मींस नॉन लिविंग के लिए. हालांकि रोज अ प्लांट उसको लिविंग ऑब्जेक्ट में माना जाता है, बट इट इज नॉट ह्यूमन एट ऑल. ओके, सो ये कंडीशन वहां पर अप्लाई होती है. पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स act as living things. Okay, action is being shifted from person to things. Is it clear? I hope it's clear. The next one, that is transferred epithet. Here is also something is being shifted. यहाँ personification में जिस तरह से action shift हुई, so transferred epithet is also something is being shifted there. And what is that? That is feeling. जो फील करते हैं ना, महसूस करते, that feelings are being shifted from human to non-human. Okay, feelings are shifted from human to non-human. What does it mean? For example, I said, I slept on a restless bed. I slept on a restless bed. Is it really that bed which is restless? No, not at all. It means that is I who is restless, who slept on a bed. So यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बेड है रेस्टलेस, जहां पर जो आई है वो सोया है. That's wrong. So क्या हुआ, जो फीलिंग्स है, रेस्टलेसनेस क्या है? इट्स अ फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग. सो ये कहां शिफ्ट हुई? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बेड पर शिफ्ट हुई है. सो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. इज इट अंडरस्टूड और नॉट? आई होप कि आपको समझ आ रहा है. पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट के बीच का फासला, सिंपली पर्सोनिफिकेशन एक्शन शिफ्ट करता है ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन, एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट फीलिंग शिफ्ट करता है ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन. डिड यू गेट द पॉइंट? आई होप यू आर. दैट्स व्हाई इस पूरे बोर्ड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको जो पॉइंट्स, जो फिगर ऑफ स्पीचेस पैरेलली हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका डिफरेंस पता चले और आपको याद करने में, समझने में, बाय हार्ट करने में आसानी जाए. सो वन मोर अनदर फिगर ऑफ स्पीच is the beautiful hyperbole, which is being funnily pronounced as hyperbole as well. Okay, but basically it is hyperbole. Hyperbole is nothing but an exaggerated overstatement. Exaggerated overstatement, that means हम कई बार जोश जोश में होश खो देते. हम बोलते मैं तो 5वें माले से कूद जाऊं और मुझे कुछ भी ना हो. इज इट पॉसिबल इन रियल? नो, नॉट एट ऑल. दैट मींस 5वें माले से अगर आप कूद जाए तो आपको कुछ भी ना हो, पॉसिबल ही नहीं. आपके हाथ पैर टूटे, कुछ हो, कोमा में जाए, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज आल्सो हाइपरबोल. इन सेंटेंसेस इन लाइन आल्सो सच टाइप ऑफ ओवरस्टेटमेंट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड. अगर ऐसा बोला जाता है तो वो कुछ नहीं पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है. ओके, जैसे शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स. अगर कोई रोता है, एक लोटा भर पानी निकल जाएगा, बट ओशियन ऑफ टीयर्स, दैट इज overstatement, exaggeration. So that is nothing but hyperbole. Are you all getting the point? Is it understood? Hyperbole and overstatement, exaggeration. Okay. And one another with that, that is nothing but euphemism. Euphemism, it is also one of the beautiful figure of speech. Euphemism, where unpleasant events are being expressed in a little mild way. दुखद कोई बात, जो घटना है, उसे अगर आपको बताना है तो थोड़ा सा कम दुखी करे, ऐसे लहजे में, ऐसे जबान में आप जो व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, दैट इज नथिंग बट यूफेमिज्म. इन जनरल हम बोलते हैं ना, अगर किसी के यहाँ देहांत हो गया तो हम ये नहीं बोलते कि मर गया, देन हम क्या बोलते हैं? यही ईश्वर की मर्जी थी, है ना?
बहुत अच्छे थे। सो वो जो एक्सप्रेशन है वो यूफेमिज्म का ही एग्जाम्पल है। आई हैव रिटन वन ऑफ द एग्जाम्पल, आफ्टर माई डिपार्चर आई शॉल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। After my departure, I shall always be remembered. After my departure means what? After my departure? यहाँ मेरा जाना, इसका मतलब एक घर से दूसरे घर जाना नहीं। इट मीन्स जब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं या चली जाऊं तो मैं क्या की जाऊंगी? याद की जाऊंगी, राइट? सो दैट इज, जो मेरा चला जाना, दुनिया छोड़कर जाना, इसका मतलब मेरे डेथ हो जाना। दैट्स अ वेरी बिग डील, but it is being told in a very mild way. That is nothing but euphemism. Did you get the point? I hope you got it. There are various figure of speeches. What did we learn now? It's alliteration parallel with repetition, simile with metaphor, personification with transferred epithet, whereas hyperbole with euphemism. I am damn sure that you can easily find out your way what you want. Shall we continue the further? Are you all ready? Okay, then let's continue. Let me invite the little. Wait a minute. Not to worry. If you will not understand and if your comments will be disputed given there on the comment box, I will read those all and definitely try to improve my language so that the way of a language will become easy to go towards down to earth. That means each and every student, हर एक बच्चे के समझ में वो आए, वो understand हो. And of course, you are expected to continue with socially social so that I will always be interact with you through this. Okay, it's not possible for me to meet each and every one, but at the same time through the medium of this invention of science, one of the channels socially social, where I can meet with you, I can reach towards you time to time. Okay, so as we have seen some couple of figure of speeches, there are some other figure of speeches as well. For example, there is one what we call as inversion. Inversion? Inversion. What is that? What is inversion? Inversion word to word क्या sense निकालता है? It is nothing but it is giving something inversely. So that is nothing but whatever is written in a line in a sentence which is not written in a proper prose order. So it is called as sentence is not written in a proper prose order. Okay. So you can easily understand inversion. These all figure of speeches, as I always said, as I usually said, that figure of speeches mostly comes in sentences. No, in lines. It means in poetry form. So the sentences that are being used that are not sentences but the lines. Lines comes in a poem, in a stanza, in such a way so that the rhyming scheme and a rhythm, the pattern of the lines of the words are being prepared, and so that the words are being misplaced here and there. Suppose if we have to give an example, so we can write here, never friend makes he. अब जरा देखिए, ये जो लाइन है नेवर फ्रेंड मेक्स ही, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता. इट इज जस्ट नथिंग बट the group of words, nothing else, group of words. Never friend makes he. Basically ये कैसा होना चाहिए? He never makes friend, isn't it? He never makes friend. So actually ये word इतने jumbled हो गए हैं तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता. But ये सेंस actually poems के लिए, lines के लिए बहुत important है. और इस तरह का फॉर्म अगर किसी लाइन में अप्लाई किया जाता है, that is nothing but the figure of speech that is called as
inversion. Are you all getting the point? Is it understood? I hope you understood. The second one that you know very well, that is called as onomatopoeia. What is that? है ना, देखिए स्पेलिंग आप देख लीजिए, onomatopoeia. अगर हम spelling wise जाए तो it is being pronounced just like onomatopoeia, but it is actually onomatopoeia. Okay, onomatopoeia. onomatopoeia. ओके, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया। जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो उसमें बड़ा अलग अलग सा साउंड, अलग सा रिदम सुनाई देता है। दैट इज नथिंग, जैसा वो वर्ड है वैसे ही उसका एक्सप्रेशन है। इसमें जिस किसी लाइन में अगर कोई जिंगलिंग साउंड आ गया, कोई साउंड मेकिंग वर्ड आ गया, तो साउंड ही अपना एक्सप्रेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डस्टर। ओके, दिस इज अ डस्टर. If it is being moved down, spelled down, what happened? No need to tell. हमें बताने की जरूरत नहीं, आपको सीधा समझ आ गया होगा कि ये हाथ से छूटकर सीधा नीचे गिर गया और इस वजह से वो साउंड उठा। तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको एक्सप्रेस करता है कि एक्चुअली हुआ क्या। So in onomatopoeia, what happened? Sound expresses its meaning. What is it? Sound expresses its meaning. Sound expresses its meaning. Okay, for example, zoom, zoom, aeroplane flies. What does it mean, zoom, zoom? What does it mean? आपने देखा होगा बच्चों के साथ भी जब आप खेलते हैं तो कोई ऐसे वर्ड जो बहुत अच्छा सेंस करते हैं, ऐसे वर्ड हम यूज नहीं करते। जब झुक झुक गाड़ी खेलना है तो जू वॉल्यूम करते तो पता चलता है गाड़ी आ रही है, दैट मींस ट्रेन आ रही है। सो देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसेस साउंड जस्ट लाइक जिंगलिंग, जस्ट लाइक breezer, just like drizzle. These are some words, ripple. These all are the words which expresses sound. So thus words, if it is coming, that sound expresses its meaning, nothing but the figure of speech is onomatopoeia. Are you all getting the point? I hope you understood it. I again repeat, in Socially Social channel, you can watch various subjects, various things on various subjects. You can get it. Don't forget to subscribe, comment, as well as like or dislike, whatever as your choice. Another one. Are you ready or not? Or getting bored? I hope not. Litotes. Now, what is this litote? Litotes. Litotes. Somebody can pronounce as litote as well. In general, which is familiar to us, litotes. Okay, so what is exactly this litote? Litote is nothing but negative sentence approaches positive stress to the meaning of a sentence. Okay, for example, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ना, इन जनरल इन मराठी देयर इज वन स्टेटमेंट। अगर आप मराठी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या आपको कभी मराठी का लहजा पसंद आए, तो इन जनरल ऑर्डिनरी पीपल जब आपस में बात करते हैं ना तो बड़े सुंदर से एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मी काही असा तसा माणूस नाही, मी काही असा तसा माणूस नहीं। इसमें ऐरा गैरा वर्ड भी यूज किया जाता है, मैं कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं। इट मीन्स आई एम समथिंग स्पेशल, इजंट इट? सो जहां वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा नहीं, ऐरा गैरा नहीं, इसका मतलब वहां पर मीनिंग क्या आ रहा है, सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट दिखा रहा है। लेकिन उसका जो सेंस है, स्ट्रेस किस पर हो रहा है कि भाई आई एम स्पेशल, नॉट एन ऑर्डिनरी, इजंट इट? सो हियर व्हाट इज एग्जैक्टली लिटोट्स? What is litotes? What did I say? That negative sentence expresses or gives positive stress. Okay. Negative sentence. What did I say? Negative sentence
gives positive stress. Okay, gives positive stress. Positive stress. To what? To the meaning of a sentence. Okay, to the meaning of a sentence. Are you all getting the point? Meaning of a sentence. As I said, if example, I am not an ordinary man. यहाँ पे क्या बोला है? I'm not an ordinary man. मैं कोई ordinary सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ. It means I am an extraordinary man. Positive stress आ रहा है. That is लीटोट. और इसी का उल्टा अगर हम देखें, that is irony. What is that? Irony. Then क्या हो रहा है? Negative sentences gives positive stress. So irony opposite that positive sentence gives what? Yes. Negative stress. Stress to whom? That positive sentence gives negative stress to the meaning of a sentence. Okay. For example, क्या बोल सकते हैं हम? जरा बताइए. Okay. दिमाग लगाइए. थोड़ा तो सोचिए. ठीक है. हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं she is so intelligent that wisdom is invisible on the earth. She is so intelligent that wisdom is invisible on the earth. अब देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि खुद विजडम उसके सामने अर्थ से इनविजिबल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच आ जाता है ना. और ये नेगेटिव अप्रोच जिस किसी सेंटेंस जिस किसी लाइन में आए तो वो फिगर ऑफ स्पीच सीधा सीधा आयरनी. ध्यान रखिए that litotes gives negative sentence that gives positive approach, positive stress, whereas irony give positive sentences, it gives negative stress to the meaning of the sentence. Okay, positive sentence gives negative stress, that is irony, and the negative sentence gives positive stress, that is litotes. I hope you understood it very well. Once again, I will be back with remaining figure of speeches, and definitely I hope that you will understand each and every concept of figure of speeches, which is ornament of a language and which is very essential to understand. सभी बच्चों ने, सभी व्यक्तियों ने इसे ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझिए. सिर्फ हमारे काम का नहीं, हम किसी और को भी ये अच्छी तरीके से समझा सकते हैं. माइट भी हमारे से ज्यादा अच्छी आपकी लैंग्वेज हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो. हम फिर एक बार कहेंगे कि आपके पास अगर कुछ आइडियाज हो, प्लीज सोशल चैनल के इस पार्टिकुलर वीडियो में ऑब्जर्व करें और कमेंट बॉक्स में नोट करें. थैंक यू वेरी मच. वी विल सी यू अगेन. बाय बाय.